अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टाग्राम की सेंसेशन, सबसे बड़ी इंस्टाग्रामर। आई थिंक यू आर द बिगेस्ट इंस्टाग्रामर। If you say so, I don't consider myself as the biggest. Is there anyone bigger? I don't think there is anyone bigger. I mean, definition है, obviously Instagram बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उसमें और किस्म के लोग भी हैं, but yeah, so Hira Atiq, popularly known as Hirableeh. Yes. How are you? Welcome to the show. Thank you for having me to your show. ठीक है, so Hira, how are you? I am good. How are you? I'm good. आप एक शूट से आ रही हैं सुबह? हाँ जी. किस चीज़ का शूट था? Style होगा. Style, okay. Very cool, very cool. So I'm gonna start this conversation with, I'm not gonna start with अपनी life की story बताएं. नहीं, आप मेरे से पूछे मेरी I think that's been done here and there, at least somewhere. Has it been properly done before? No. No? See, you guys don't even ask me about my life. So unfair. नहीं, but when did you start? I started in 2014. 2014. बिल्कुल इंस्टाग्राम मेरा ख्याल है 2-1 साल का था उस टाइम पे, 2-3 साल का था. Probably. और आपने स्टार्ट ही फैशन से किया था या? हाँ, we started with her and him. We was a fashion and beauty blog. अच्छा. और उसके बाद फिर so her and him was the blog in the beginning and you guys weren't showing your faces at the time. We were. Her and him पे हम में साथ ही तस्वीरें लगाते थे. It was like two sisters running a blog, so that was the entire concept. I think that's how we got a lot of attention because we were two people running the blog. People love it when people are there together. Yeah, you know that. Right. And उसके बाद फिर eventually आपने अपना platform बनाया. Yeah, and then because her and him got deleted twice. Why? Somebody reported it initially. I even got a message back then. He's like, it was a fake account. They're like, watch what I'll do with your account and all kind of that stuff. And he's like, I'm going to take your account down. But I tried getting it back. I couldn't. Achha. And then I made another one. And we got like 10K on the new one in like a week, which was a huge achievement. Right. And then that one got taken down as well. But why was this happening? Like Instagram ने कुछ आपके you wrote down to them as well? Yeah. A gazillion times. I even called this guy. मुझे किसी ने उनका नंबर दिया था. सिंगापुर में होता है. Called him and he's like, why are you calling me? You're supposed to email me. I was like, my account. मैं email करके वैसे थक गया. But then I think everything happens for the best. Right. I think we gained more than we lost. We then shifted to our own accounts because nobody can report my face. Right. Telling that's cool. And so you've been there for 6 years. You know, you've been through the thick and thin of Instagram. You're one of the first few girls जिन्होंने आकर ना सिर्फ इसको किया, but have been able to be like we normalized it. Yeah. So ना सिर्फ आपने successfully किया, बल्कि आपने identify किया कैसे जाता है. So now there are hundreds and I would say thousands of other accounts. Bloggers, yeah. जो कि उस टाइम के जो 3-4 लोग थे उनको देखकर अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं. बिल्कुल. पहले तो how does that feel? I think it feels great. I don't know. I have mixed feelings. Sometimes I think it's like really good, but sometimes I feel as if now people have it easier and I wish I had it easier as well. But then kind of being the pioneer of something also makes me feel really good about it as well. Yeah. But yeah. But then I also feel like it is easier in a way that you know what to do, but then it's competition भी उसी हिसाब से होता है. So जो early adopters हैं उनके लिए ये होता है ना कि वो अपनी creativity बड़ी easy हो जाती है. Early adopters के लिए है कि you kind of have your audience built already. Newcomers have to like really sort of, you know, maneuver through it. Place and be different from the others. Yeah, and because there are already like standards set. पहले ही होता था हम कुछ भी करते थे ना तो नहीं भी likes आ रहे whatever. Like पहले ज़माने में तो likes का concept ही नहीं था यार. हम content बना के डालते थे, मज़ा आता था. So उस sense में I feel like being there at the time was a lot of fun. But तब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी काफ़ी अच्छा था. अब तो एल्गोरिदम में ही बंदा फंसा रहता है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं उस दिन हमने से भी डिस्कस करा था कि अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ टाइम्स इन दिस व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू प्राइमरीली कि इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर कल्चर एंड सिस्टम क्या हो गया. बट आई फील लाइक वी सॉर्ट ऑफ बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी वेयर वी आर सो स्टक ऑन सेइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स कि वो क्या सोचेगा, लाइक्स किस तरह ज़्यादा आएंगे. आई पर्सनली थिंक इवन I would say our content in the past was much more fun because it was spontaneous. Like I used to hold my phone and I'd be like मैं story बना रही हूँ. अब मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ क्या मैं ये story लगा सकती हूँ, इसमें से लोग क्या गलत निकाल सकते हैं. Am I being politically correct? Yeah. So it's different now. Yeah, and it's like it's more driven by consumer sentiment than your own creativity. Yeah, which is not what I want my platform to be. It should be something that I want to put up, not what
people keep on pressurizing you and उसमें ये भी होता है ना कि alternate conversation है कि आती तो कर लें तो अपना ही मर्जिया करें, लेकिन इसमें मसला ये आता है कि जब हम अपनी मर्जिया करते हैं ऑफन टाइम्स उस पर इंगेजमेंट अच्छी आती है, लाइक इट्स समथिंग इट्स गुड वर्क बट रीच नहीं होती, लाइक इंस्टाग्राम एल्गोरिथम उसको डिफाइन नहीं करता है. Instagram algorithm is another debate. Yeah. So I mean, you know, you've seen the way that it's evolved in the past 6 years, and we've had our problems and we've had our, you know, things that we've loved. लेकिन इस साल post COVID एक खास नया problem उठा, you know, जिसमें और बाहर हम ये देख रहे थे Instagram influencer culture, Instagram influencer bubble is going to burst, इस तरह की खबरें आ रही थी वाइस की वगैरह वगैरह. पाकिस्तान में हमें इस तरह सुनने को नहीं मिला. पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि इंडस्ट्री बूम कर गई, right? And you know, suddenly there were a lot of brands, there was a lot of money, there's a lot of somewhat glamour कि, you know, business class लोग travel करना शुरू हो गए और बाहर के brands ने notice करना शुरू कर दिया. Please make me travel business class. I haven't. You haven't? Oh my God. Wow. लोग कहते हैं जी ये तो super privilege, super देखो जरा ये आप तो मतलब business class में Emirates को बोले Emirates please यार, come on please. So ये चीज़ सारी आई and then COVID के बाद suddenly, you know, there were a bunch of people who wanted to obviously join the bandwagon और वो भी आए. But then उसी के साथ मैंने देखा कि the influencer culture, right? Influencer culture and toxic influencers and वो सारा का सारा उठा. Why do you think that is? अच्छा, so first of all, COVID के time पे all the hate and all the influencer culture or whatever you call it, I think वो इतना ज़्यादा इसलिए हुआ है because people have nothing to do. We are sick. Like in the initial days, I didn't know what to post. मुझे समझ नहीं आती. I was like, should I post about fashion? But people aren't going out anymore. So what am I supposed to post about? Yeah. What can we do? So I think we all, not that we decided एक साथ, but अपने अपने दिमाग में सबने सोचा कि यार नहीं कुछ positive और अच्छा लगाता है, because people are already going through so much. There was so much trauma. I kid you not, I did a few live sessions. I did a live session with a psychologist और people उस पे भी इतने comments आ रहे थे. People were done. Nobody was in their right mind. Even I was in the news and everything. It was too much. It was just too much for everybody. We couldn't take it anymore. And in hindsight भी अगर हम देखें ना तो हमने जो इटली की इमेजरी आ रही थी उसको देख के जो ट्रॉमा हो रहा था, it wasn't as bad. Like इवन ग्लोबली उतना उसको तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं 10 में से 8 लोग मर जाएंगे. मैं बता रही हूँ, देयर वर सर्टेन ग्रुप. एक तो न्यूज़ था, ठीक है, टीवी मैंने अवॉइड कर दिया, बट देन देयर वर सर्टेन ग्रुप्स, हालात अपडेट एंड सो मेनी मोर. रोज़ कोई ना कोई खबर है. वो ऐसी खबर होती थी दैट यू यूज्ड टू गेट गूज बम्प्स एंड यू वर लाइक नो आई कांट सी दिस एनीमोर. सो कमिंग टू द पॉइंट, देयर वाज सो मच न्यूज़, देयर वाज सो मच बैड न्यूज़. वो सारी चीज़ें पढ़ते एवरीबडी वाज डन. सो आई थिंक जो मैंने लोगों का ये mindset समझने की कोशिश किया है, everybody was so done and sick and tired of everything that they had no outlet to take out their frustration, anger, whatever you call it. So then you come on Instagram and you open your feed and you see someone smiling, you're like, this is the person. This person having a good day? Yeah. No, if I'm not having a good day, you're not gonna have a good day. That is what एक तरफ जहाँ से मुझे लगता है आती है. एक तरफ मुझे आती है which when people don't understand कि like going to office is work for you, this is work for us, right? So no matter what the country is going through, you're still going to work and I still have to go to work because you have bills to pay and so do I. Right. My work is putting out content. Sorry, I'm putting lipstick on your it's perfectly fine. My work is to put out content, whether it's related to fashion, beauty or lifestyle. So that's what I'm going to do. Right. तो लोगों को ये frustration होती है कि भाई इतना कुछ हो रहा है and why are you still talking about fashion, because that's my job. Yeah. And I understand that even beyond the job conversation, अगर आप देखें तो obviously, you know, अभी motorway rape case हुआ था, nobody posted anything because that's like a दिल दहलाने वाला वो होता है ना कि वाक़या था. लेकिन कोविड के टाइम के ऊपर आई रिमेंबर फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट 3-4 दिन लोगों को नहीं समझ आ रही थी, बट इवेंचुअली आपने नॉर्मलाइज करना था. यू weren't gonna just like 3 महीने ऑफ 2 months ऑफ लॉकडाउन आप ये तो नहीं कर सकते थे कि ये दुनिया ख़त्म हो रही है, तबाही मच रही है, पीपल आर गोना गो मैड अगर वो इंस्टाग्राम पे भी आके यही देख रहे हैं. एंड मोर देन दैट, उसके बाद मुझे याद है एक पॉइंट के ऊपर खासकर फैशन वालों को बड़ा शोर मचा था कि जी नो वाई यूज हालात इतने ख़राब हैं, आप कंज्यूमरिज्म क्यों फैला रहे हैं, आप चीज़ें क्यों महंगे कपड़े, विच आई फाउंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक ही ब्रेथ में वो ये देख रहे हैं कि खाड़ी ले ऑफ कर रहा है, गुल अहमद ले ऑफ कर रहा है,
यू नो एंड बिजनेसेस की क्या सूरत हाल जा रही है, और दूसरी ब्रेथ पे वो कह रहे हैं कि जो बंदा बिजनेस को अगर इंकरेज भी कर रहा है हाँ. वो भी लोकल बिजनेसेस लाइक यू नॉट. I personally think कि कोविड के टाइम पे even our business it went down by like 70% if I have to say. Nobody had any sponsored brand deals or anything. We were only putting out our own content और उस पर भी हो रहा था at the end of the day everybody has to survive. Yeah, obviously. And लोगों को ये भी समझ नहीं आती ना कि lot of times they say कि इन्फ्लुएंसर्स बड़ा ग्लैमरसली रह रहे हैं. मतलब बिजनेस क्लास टिकट जो है वो आपको मुफ्त का टिकट मिला है, ठीक है, वो आपको रॉ कैश नहीं मिला जो आप अपनी मर्जी से कर Let me just put it out for you guys. All the PR packages we get, all the glamorous things we get, they're not free. We promote them and we've worked really, really hard for that. So nothing that you see here is free. Yeah, and it's एक तो ये कि you work really hard and that shouldn't be discounted. खासकर it's years 2014 to 2020. To 2020 and उसमें मैं कहूँगा कि 2000 उसमें ये याद करना बड़ा जरूरी है कि 2018 से पहले तो कुछ भी नहीं था ना ग्लैमर तो क्या. 2 साल we've also worked for free. और इसके बाद we've charged very minuscule amounts. Very tiny and constantly worked with brands like लोग आके कहते हैं कि you know build the relationship. We've built relationships. Yeah, build relationships. लोग आके कहते हैं कि ये brands जो हैं आपके वो you know ये sponsored content कितना बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं. We've always wanted to do good content. Yeah. And we fought with brands कि अगर हमें यहाँ तक भी इंडस्ट्री पहुंची है तो वो हमने लड़ाइयाँ की हैं, उनको समझाया तो हम पहुंचे. I'll be very honest, this is what's special. Sorry, I'm cutting you. My sister says, मैं तो बहुत मुझे तो हर चीज़ लगती है कोई भी नहीं करेगा, but my sister is very positive and our entire work life she was the first one to the brands को कहा कि भाई if you want this पहले ये ideas है. brand said no. She's like you know for this you have to pay it. Every single brand that we worked with has initially said no to us in the very start, but then again they understand and then they come back and then they take you. So it doesn't come easy. Brands say no to you, you don't get any work. Slowly when things change and you make everything normal, that's when they come up. Yeah. And more importantly, like लोगों को लगता है ना कि बहुत रॉ कैश इन्वॉल्व होता है. रॉ कैश काफ़ी दफ़ा नहीं इन्वॉल्व होता. a lot of glamour that they're seeing. It's just यार मुझे अगर मेरे पास 10 कपड़े हों, मैंने अपनी जेब से ख़रीदे हों, मेरे पास 100 कपड़े हों जो मुझे मुफ्त के मिले हों, मेरी ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट लाइक अनलेस जो ग्लैमर है जो लोगों को लग रहा है वो रॉ कैश के ऊपर आता है. रॉ कैश जो आपके पास आता भी है उससे आप कैमरास ख़रीद रहे होते हैं, आप प्रोडक्शन वालों को पैसे दे रहे होते हैं, आप लिटरली 10 और चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. We have a team on board. We have a lot of people on our team जो कि हमने मिलवाए नहीं, हम soon आपको मिलवाएंगे. We have to pay them. We're literally creating jobs. I think कभी मैंने ये भी देखा people say oh you don't even take your photos yourself. I was like yeah because I hired someone, I'm paying that someone. पैसा आपकी इकोनॉमी में फिर इकोनॉमी में लग रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है. If I'm getting money from somewhere, why shouldn't I give it to somebody else? सारा रख के खुद किधर जाऊंगी. हाँ बिल्कुल, absolutely. But so that happened right, like एक ये resentment आना शुरू हुई towards influencers. अब हम इस जगह पर खड़े हुए हैं. I'd like for you to sort of give me like एक आपकी understanding कि how do you see Instagram influencer space as of today? How do you see it evolving in the future? As of today, I think it's a very confused place because there's a lot of pressure. People see being an Instagrammer and being an influencer. I call myself a fashion and lifestyle influencer. So my job is to put out content for fashion and lifestyle and beauty only. But there is so much pressure to be a social activist now as well. I just personally think people don't understand कि ये सारी different चीज़ें हैं. Activists अलहदा होते हैं, influencers अलहदा होते हैं, ये सारी अलहदा चीज़ें. पर हमारे यहाँ पे वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक ही आते हैं. आपके पास followers है तो आप दुनिया की हर चीज़ करें. आपके पास प्लेटफॉर्म है तो you have to use it for everything. आप अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करें अच्छे के लिए, it's really good. But one should not be forced to do certain things क्योंकि आपने वो भी तो करना है ना जो आपका काम है. आप ये तो नहीं करते जा सकते ना जो लोग आपको कहते जाएं. मतलब if something in the country happens, I feel really bad and I want to speak about it and I will, but then there's so much pressure to keep on speaking about it. Why do you want people to keep on thinking about something bad that has happened? Yeah, people want to calm down as well. When I want people to come to my feed and relax, not to worry like about more stuff. अपनी जॉब रोल्स है ना. It's not like कि आप ये डिस्काउंट कर रही हैं कि वो चीज़ें बुरी हुई हैं उनको छुपा दो. It's that news agencies का ये काम है, दूसरे social activists and they're working on it. Yeah, there's so many activists that are working on it already. Yeah, and your role on the other hand is a very specific role and you're doing that role. बजाय इसके कि आप भी उनका रोल करना शुरू हो जाएं और वो लोग फिर हाफ कुक किस्म का आपका रोल कर रहे हो. I don't understand this.
I mean, I'm sorry if I'm offending anyone for this, पर मुझे काफ़ी hypocritical लगता है because once you get somewhere, people are like, आप हैं कौन है आप समझते क्या है, फिर कुछ हो जाए आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे. I was like, मैं कल वही बंदी नहीं थी जो कुछ भी नहीं थी, and today you want me to use my voice. I will always use my voice for the right things. But things that you feel strongly about. Yeah. Right, they should be coming from you because this is a personal platform. This is not a public platform जिसके अंदर सबकी आवाज़ is very important. This is your platform. Somebody agrees with you and they resonate with you. And that's literally what we did with her and him. What we decided was, because हमने अपने कर दिए थे, तो her and him पे we post news and we post everything because it's a different platform which has less of our content and more of the general content that goes around the world. So we post stuff there, and I think sometimes people don't realize that is also our platform and we are using one of our platform for another thing, and they're just like, nahi. Right. इस पे क्यों नहीं किया? नहीं, so when you said कि it's a very confused environment, I do understand that in a way कि लोगों को sort of understanding नहीं है कि ये पूरी space है क्या? अच्छा, अब इसमें ये भी है कि even the young lot that I can I call them the young lot? I mean the new Instagrammers that are coming, even they don't know what to do because अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है, sorry if I sound so confused. People generally think talking about issues जो अभी अभी चल रहे हैं उनसे रीच खिरती है. You guys are very wrong. If you talk about every single issue जो ट्रेंडिंग होता है, आपकी रीच बढ़ती है. So if you see someone who keeps on posting about anything that's happening, I'm sorry but most of the time they're just doing it for the reach, क्योंकि उससे एक्चुअली रीच बढ़ती है. मुझे DMs आते कहते हैं आप इसके बारे में इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आपकी रीच गिर जाएगी ना. I was like, आपको पता है मेरी रीच कितनी ऊपर जाएगी अगर मैं इसके बारे में बात करूँ? Because it's trending. Anything that's trending उसकी रीच बढ़ेगी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है. डेफिनेटली. और वही वाली बात है कि फिर आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार मैं एक नीश बनाई थी मैंने, फैशन भी, and I want to be part of this niche and I want to work hard in that niche because there's so much room to grow and there's so much that can be done. But if I'm being distracted every day by left, right, here and there, this and that, तो मैं ये करूँ या मैं वो करूँ? And to be very honest, even when I made this, when I made my vlog, I was on a gap year. And I myself was very frustrated back then. This was my outlet, my free and calm and space that made me happy and brought peace to me. Right. So you're kind of making my sort of happy place not so happy for me by saying. And unfortunately, मैंने जितने भी मैं बड़े क्रिएटर से बात करता हूँ उन सबका ये ओपिनियन है कि like this was our happy place. Yeah, like this was our creative outlet. It made me happy. Like if I wanted, अगर मेरे mind पहले I used to doodle, I used to paint and draw. पहले मैं blog पे भी वो लगाती थी. उसके बाद this was my outlet, like thinking about content, getting ready and posting about that. It made me happy. It still does. Yeah, but it's sort of become difficult now. Yeah. It doesn't do it at the same level. Yeah. 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, परेशानी होती है, anxieties होती हैं. But हाँ, so you said कि this is a confusing space and I feel like कि जब हम देखते हैं खासकर फॉर अ न्यू इंस्टाग्रामर टू कम इन, उसको समझ नहीं आ रही. लाइक मैं बाहर जब देखता हूँ तो बड़ा क्लियर है, एक आर्ट अकाउंट है, फैशन ब्लॉगिंग है. इवन एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि लोगों को ये भी समझ नहीं आती कि सोसाइटी के अंदर सेगमेंटेशन किस तरह से होती है. डिफरेंट लोग किस तरह के होते हैं. तो वो फॉर एग्जांपल आके एक्सपेक्ट करते हैं जी आपने 50,000 का जोड़ा पहना हुआ है, ठीक है, तो आपने इतना महंगा जोड़ा क्यों पहना हुआ है, लोग इतने गरीब हैं बेचारे, वो ये. हालांकि आपकी एक टारगेट डेमोग्राफिक है, आप उसके लिए कर रहे हैं. जो थोड़ी सी 5-10 हज़ार वाला डेमोग्राफिक वाला जो होगा वो एक और बंदा होगा, वो उसको टारगेट कर रहा होगा. हर बंदा अपने सेगमेंट के हिसाब से होता है. एंड एवरीबडी डज नॉट नीड टू मेक एवरीवन हैप्पी. Unfortunately, I actually did a poll on this because I posted a dress and people were like, no, this मैंने caption में अपना लिखा ना reasonable, and a lot of girls said this is not reasonable. I was like, okay, maybe I'm not understanding your point of view. So I did a poll on my story. I was like, maybe I'm wrong. मैंने वो किया and I asked people कि आप मुझे बताएं एक डिज़ाइनर जोड़ा अगर आप शादी वाला काम वाला लेना चाह रही हैं तो आपके लिए उसकी प्राइस रेंज क्या है, ताकि मैं उसके आर पर, क्योंकि मैंने तो if I'm putting out fashion content, I want people to relate to it, and I'm putting it out for those people, so I want to know their feedback as well. Right. The answers were actually really funny and really different. एक जगह पे शुरू हो रहा था 1500 से. I am very sorry, आपको नॉर्मल जोड़ा मिल सकता है, आपको डिज़ाइनर काम वाला जोड़ा 1500 में नहीं मिल सकता. And then it went up to like लाख, 5 लाख, 2 लाख, इस तरह 2.5 लाख. हर एक का एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग था, परसेप्शन था बेसिकली. और हर एक की डिफरेंट एक what do you call it, इनकम होती है.
अफोर्डेबिलिटी, हर एक की परचेजिंग पावर दैट यू कॉल, वो डिफरेंट होती है. सो इफ आई हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, आई हैव टू सेटिस्फाई, व्हिच आई कांट, यू कांट सेटिस्फाई ऑल ऑफ देम, बट मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूंगी. यू प्रॉब्ली टेक द मेजॉरिटी सेगमेंट ना. आप स्पेक्ट्रम उठाएंगे और आप मेजॉरिटी सेगमेंट उठाएंगे और आप कहेंगे यार इस ब्रैकेट के अराउंड मैं करती हूँ. तो when I put up options, I put up both options. I put up affordable wear and then I put up clothes जो मैंने खुद सिलवा के वो क्यों होंगे, बिकॉज वो आपको उसमें लोगों को लगता है वो आपको सस्ते पड़ते हैं, पर आप उसमें आपकी शू लेदर कॉस्ट होती है, जो कि जिन्होंने What shoe leather cost? शू लेदर कॉस्ट इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है. इट इज़ जब आप एक चीज़ लेने जाते हो सस्ती से सस्ती, सो यू कीप ऑन गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, तो जो आपके जूते के नीचे की लिटरली यही चमड़ी जो रगड़ती है ना, वो आपकी शू लेदर कॉस्ट होती है. सो व्हाट अ ब्रांड और डिज़ाइनर डज फॉर यू इज़ वो आपके लिए वो सारी हसल बसल करके उन्होंने प्रोडक्ट तैयार रखा. राइट. सो आप कह रहे हैं जो आपका टाइम, उसकी पैसे होती है, टाइम इज मनी वाली कॉस्ट एक आ गई, एक आपका जो है ना जो खप की कॉस्ट है, पेट्रोल खप, टाइम, हर चीज़ जो आपने ज़ाया किया उसमें. तो आपको जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है डिज़ाइनर या किसी ब्रांड की तरफ से, इट हैज़ ऑल ऑफ दोस कॉस्ट इंक्लूडेड. एंड व्हेन यू गोइंग एंड गेटिंग अ स्टफ योरसेल्फ, आप उसमें सिर्फ ये देखते हो कि नहीं यार मुझे ये कपड़ा इतने का मिल गया, और बाकी कॉस्ट माइंड में नहीं रखते. और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी इसमें ऑब्वियसली यू नो अफेक्ट करेगी ना, बिकॉज मैं उस दिन हमने बॉट अ जोड़ा, आई थिंक फ्रॉम सैफायर, जोड़ा नहीं, वो इट वाज लाइक अ शर्ट फॉर 2500. मुझे नहीं पता कि शर्ट्स वैसे नॉर्मली अगर वो कपड़ा लेकर बनाती फॉर समथिंग इस तरह की तो कितने की बनती. आई थिंक अगर कुर्ता था तो इससे सस्ता बन सकता था. कितने तक का बनेगा? नॉर्मल कुर्ता तो 1000 रुपये में भी बन सकता है. मतलब आपने डिज़ाइन वाला कपड़ा ले लिया और आपने दर्जी को दे दिया, करवाई, स्टिचिंग इंक्लूड 1000 का बन जाएगा? डिपेंड करता है, आप तो इस्लामाबाद नहीं, मैं वही सोचा था, मेरे तो शलवार कमीज अब आजकल 2-2,500 रुपये का सिलता है मर्दों का. आई डोंट नो, मम्मा देती है मेरी सिलाई. सॉरी, ये मुझे नहीं करना, मेरी सिलाई मम्मा देती है. राइट. सो आपने ये तो आइडेंटिफाई किया कि यू नो अभी इज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्पेस. आई थिंक 1500 में शर्ट बन जाती होगी. 1500 में 700 रुपये का तकरीबन कपड़ा एंड देन 700 रुपये फॉर सिलाई. दैट मेक सेंस, दैट डज मेक सेंस. अच्छा, सो ये हमने आइडेंटिफाई किया कि इस वक्त इंस्टाग्राम स्पेस जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. बट देन हाउ डू यू सी इट इवॉल्विंग? ये क्या इसी तरह ही रहेगी, या डू यू थिंक देयर इज अ टाइम फॉर अ चेंज? आई थिंक इट विल चेंज. एक तो फर्स्ट सेंस में कि नाउ आपने भी नोटिस किया होगा, जो पहले बहुत कोविड के दौरान जो फ्रस्ट्रेशन और चीज़ें थी, इट्स गोइंग अवे बिकॉज ऑब्वियसली नाउ पीपल आर गोइंग आउट, दे हैव अदर एक्टिविटीज, दे आर काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, काम, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, जो सबसे बड़ी डेमोग्राफिक है वो अब बिजी होना शुरू हो गई है, दे हैव अदर थिंग्स टू डू नाउ. तो वो एक फोकस हट जाता है. अगर आप खाली इंडस्ट्री के तौर पे देखें तो आई थिंक इट्स gonna get better because now there's a lot of competition, like a lot of competition from already existing people, new people, old people, everything, it's there. So I think everybody's gonna up their game a lot more, and I think everybody's gonna, because of everything that has been going around, everything is gonna follow a lot of rules and regulations and steps. वो आपको स्ट्रक्चर नजर आना शुरू होगा. यानी कि जो ये जंगल बना हुआ था ना, वो नहीं रहेगा. एंड आई डू एग्री विद यू ऑन दैट कि मुझे ये लगता है, लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट अब गिरेगी कंपटीशन आने की वजह से. मुझे लगता है कि जो पीपल हु आर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स आर एक्चुअली गोना मेक मच मोर मनी. ऑब्वियसली इस वक्त इकॉनमी थोड़ी आउट हुई है. मैं प्रॉब्ली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक जाकर ये स्टेबलाइज होकर ये जो प्री कोविड लेवल्स हैं उससे ज़्यादा. अच्छा, अभी यू सेड समथिंग कि इंटरनेशनल मार्केट में मैंने भी काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े थे दैट सेड द इन्फ्लुएंसर कल्चर इज गोना एंड एंड ऑल ऑफ दैट, बट व्हाट आई हैव सीन पर्सनली इट वेंट दिस, लाइक देयर सर्टेन पीपल दैट आई फॉलो एंड दे वर लाइक, मेरे जितने ही थे वो 400 इस पे थे, एंड दे हैव ऑल हिट, लाइक लिटरली ऑल ऑफ देम हैव हिट $1 million. व्हाई? बिकॉज दे यूज्ड द कोविड वाला टाइम टू फोकस ऑन देयर कंटेंट. ईजिली उन्होंने सिर्फ फोकस करके उन्होंने ऐसे कंटेंट लगाए एंड दे बूम millions launching their own brands. And I think there's this girl I follow, Valeria. She had a couple of people on her team, और अब तो उसकी team है. I saw her vlog the other day. She has so many people on board for her team, and I was like, damn, और वही वाली बात है कि ब्रांड्स भी आ रहे हैं, यू नो, मनी इज बीइंग मूव्ड, इकोनॉमी इज गुड. सो जो वो वाला था ना कि इन्फ्लुएंसर बबल इज गोना बर्स्ट एंड इट्स गोना बी ओवर. आई थिंक दैट लोगों को अब ये समझ आया, दिस इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ पीपल हैव रियलाइज देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो हम पहले कर रहे थे, पर हमने रियलाइज़ किया कोविड के टाइम पे कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. और उसमें से एक प्रमोशन भी है. जब लोग
इस तरह की सूरत हाल होगी, लोग बाहर जाना अवॉइड करेंगे सारी चीज़ें, तो उनका फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया ही रहेगा। तो एक्चुअली इस पूरे इंडस्ट्री की आई थिंक ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है, ओवरऑल इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ी है। लेकिन व्हाट्स प्रॉब्ली चेंज्ड इज द फैक्ट कि अगर आपको याद हो एक साल पहले ना तकरीबन दिस टाइम 1 year ago ये हो रहा था कि नए नए प्लेयर्स आ रहे थे, उनको पता कुछ भी नहीं था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। उनको नज़र आता था कोई भी बंदा है, उसके एक्स अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो उनको पैसे दे देते, कहते मेरे रेस्टोरेंट को मार्केट कर दो, मेरे इसको मार्केट कर दो। अब मैं देख रहा हूँ कि जो इस किस्म के प्लेयर्स हैं ना, वो थोड़े से पीछे हो गए। इस्टेब्लिश्ड बड़े प्लेयर्स एक तो इसके अंदर आगे, जो आपने स्ट्रक्चर वाली बात की वो बहुत अच्छी की है। और दूसरा ये कि जो लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं, जिनकी एक्चुअल वैल्यू है, जिनकी एक्चुअल इंगेजमेंट है, जिनका एक्चुअल इन्फ्लुएंस है, उनकी वैल्यू अब समझ आना शुरू हुई। जो हम लड़ते थे ना पहले कि भाई यू नो वो भी तो इतने चार्ज कर रही है, वो भी तो इतने चार्ज कर रहा है, वो मसला ये था कि उन लोगों के पास या तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डिफरेंट एरिया से फॉलोअर्स इकट्ठे किए हुए थे, इम्पैक्ट नहीं था। हर एक प्रोडक्ट या चीज़ प्रमोट करने के लिए आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है। A lot of people have followers, but that does not mean कि जो आपने प्रोडक्ट प्रमोट करना है उस बंदे की वही ऑडियंस है जिसको आपने टारगेट करना है। नाउ आई इवन थिंक ब्रांड्स पहले से फेस एस्पेक्ट से देखते थे कि भाई फलाने के पास फॉलोअर्स है तो जाएंगे, बट नाउ इवन ब्रांड्स लुक एट द फैक्ट कि फॉलोअर्स हैं तो भाई कितने हैं, और स्पेशली अगर फैशन और ब्यूटी है तो कितने फीमेल ऑडियंस है, कितनी मेल ऑडियंस है, और फिर उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, एज कितनी है, वो उसके हिसाब से किन शहरों से हैं, सारा कुछ कह के। तो वो बड़ा डेटा ड्रिवन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। बट नॉट देयर येट, यूएस में तो बहुत आगे, बट इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट। And I think for anyone who's genuinely interested in this particular field and domain, it's a good time ahead. You know, अभी वो शायद परेशान हो जाए कि ये तो शायद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बैड सीन है, बट अगर तो आपने सिर्फ लाइक्स के पीछे जाना है और आपने वही अगेन कि करंट अफेयर्स करके ईजी लाइक्स है ना, वो ईजी लाइक्स हैं, ईजी व्यूज़ हैं, बट इफ़ यू क्रिएट अ नीश एंड यू क्रिएट एन एक्सपर्टीज इन दैट नीश, तो ऑटोमेटिकली आई फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर पीपल हु आर वर्किंग देयर। अच्छा, सो आई एम गोना कम टू द नेक्स्ट मेजर जो मैंने आज डिस्कशन करनी थी। You're a woman in a country where conventionally women have not been able to claim public spaces, right? हमने देखा है कि unfortunately जो recent time के incidents हैं वो तो aside, even before this हमारी ख़वातीन उतने आराम से independently बाहर नहीं जा सकती थी, वो इतना independently अपने आप को express नहीं कर सकती थी। पब्लिक प्रोफाइल हाँ। अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के ऊपर मुझे याद है कि चलें इंस्टाग्राम तो पब्लिक वाली बात भी आती है, अगर हम फेसबुक पे भी जाएं तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आवर वुमेन वर नॉट comfortable putting up their DPs. For a very long time लोग कहते थे आप अपनी DP आपने लगाई, मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, फैमिली पुटिंग अप, डोंट पुट अप योर डिस्प्ले पिक्चर्स, लाइक फूल पट्टियाँ आ रही होती थी या कुछ बिल्डिंग की तस्वीर आ जाएगी या कोई पावर ऑफ गर्ल की तस्वीर लगी होगी, एंड देयर वाज रीजन फॉर दैट एज वेल, बिकॉज पीपल वर लाइक लड़की की प्रोफाइल आती ही नहीं थी और फिर फेक प्रोफाइल बन जाती थी, और ये कंटिन्यूअस मसला था अनफॉर्चुनेटली कि ये चीज़ हो रही थी। एंड वी नेवर रियली सॉर्ट ऑफ एज अ सोसाइटी वी नेवर रियली सॉर्ट ऑफ सैट डाउन एंड थॉट अबाउट इट कि क्यों हो रहा है। मेरी मतलब एज एन इंडिविजुअल मेरी कभी उस तरह से फेक प्रोफाइल स्टार्ट में नहीं बनी। जब मैं पब्लिक पर्सनैलिटी बन गया, हाँ, उसके बाद तो मेरे पूरे ख़ानदान मैंने एक दिन देखा एक ना पूरी फेक प्रोफाइल्स की चेन थी। सो आई डिस्कवर्ड वन, उन्होंने पूरी रिसर्च करके ना उस बंदे की रिलेशनशिप्स में मेरे भाई की फेक प्रोफाइल डाली, मतलब मेरी प्रोफाइल के अंदर माय ब्रदर्स में मेरे सारे ब्रदर्स की फेक प्रोफाइल है, मेरे फादर की बनी हुई है, मेरे भांजियों की, तो बड़ा डिटेल्ड ऑपरेशन था। बट एज इफ आई वाजंट अ पब्लिक पर्सनैलिटी, एज अ गाय आई वाज लेस लाइकली टू गेट हरास्ड ऑनलाइन। और अगर आप अपने मैसेजेस में अदर्स के फोल्डर में जाएँ तो जो खप मची हुई होती है। बट विद ऑल ऑफ दैट यू केम ऑन इंस्टाग्राम, आपने पहले अपना वो हरन हैम बनाया, फिर आपने पब्लिक प्रोफाइल बनाई, and I know that was an incredibly powerful thing to do. It was a very brave thing to do उस टाइम के ऊपर। Unfortunately most recently हम ये चीज़ भूल गए, हम बड़ा इजीली टारगेट करते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये हैं और क्या वो हैं और कुछ ये नहीं करते, बस तस्वीरी तो लगाते हैं। हालांकि what they've effectively done is allowed hundreds of thousands of women to be able to express themselves, their profiles public, and to have a voice and share it and put up whatever they want to put up. Absolutely. And so do you think, पहले तो ये है कि in a very simple way, how do you feel about what you and you've been able to achieve throughout these past 6 years? I think Himail and I discussed this a lot in the beginning when we started. The businesses that we worked with were all female-led businesses, so it was a very empowering feeling, and it was also very like we were very calm कि भाई we're in good hands for like Q&A, for example, and PISA salon, for example, they were the first people we worked with. Right, and like without, I mean आप अपना content का काम कर रही थी, but
consciously or subconsciously you were able to bring about that change as well, where you were able to support a lot of these women brands. और ये तो बड़े नाम है ना, आपको PR आता है, कितने सारे PR आर फ्रॉम women जो कि घरों में बैठी हुई हैं, जो घरों से बाहर नहीं जा सकती, वो वहाँ से बैठ के बिजनेसेस कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले रही हैं. I would like to clear one thing. People also think I got a DM the other day. It's like people pay so much to send you PR packages, and I was like, I don't charge for unboxing PR packages, especially for small brands, especially क्या किसी को भी नहीं करती, because for me, but अब मुझे समझ नहीं आ रही how I want to go ahead with it, because certain times people are like, oh my god, you're always showing us stuff, but back at my back end, I'm trying to support a small business. मैं उसकी चीज़ें आपके सामने ला के रख रही हूँ ताकि उसका बिजनेस चल सके. I know certain times I spent with this lady, she was Pathan, उसने मुझे मैसेज किया and she was so sweet, she's like, मैं आपको और चीज़ें भेजूँगी, आपकी वजह से मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर, एंड शी वाज सो हैप्पी. एंड यू नो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आपका दिल भर जाता है. दिस मेक्स इट वर्थ इट, राइट? सो एंड वही वाली बात है आपने जो कहा कि अब वो आप रीथिंक भी करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट देयर एज वेल. बिकॉज अगर आप, लोग कहते हैं जी आप इतना ज़्यादा चार्ज करती हैं, इफ़ यू चार्ज लेस देयर विल बी अ बिलियन मोर ब्रांड्स who will be working with you, and then consumer स्टैंड पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर कहेगा कि यार आप सिर्फ हमें एड्स ही दिखा रहे हैं. एग्जैक्टली. अगर आप ज़्यादा चार्ज करेंगे फिर लोग बोलेंगे. वैल्यू और चीज़ें रखने के लिए यू हैव टू सेट दिस वन rate that goes with the market as well, goes with the work you're putting up as well, and goes with, I mean, it should be an amount that pays my bill and I'm able to pay people that I have hired as well. Right. So पहला तो मैंने आपसे पूछा कि how do you feel, जो कि you feel good obviously. But दूसरा जो ज़्यादा what I try to understand is कि do you see a difference between male content creators and how they're approached, तो मैं नहीं कहूँगा, how they're respected in Pakistan versus female content creators at this point in time, because अभी इंडस्ट्री काफ़ी मैच्योर हो चुकी हुई है, तो अब मुझे लगता है कि पैरिटी आ जानी चाहिए. अच्छा, तो इसको I would rather compare it to YouTubers, because Instagram influences male as such है नहीं. All the YouTubers have their own profiles, but they don't do Instagram that उस तरह से, right? But I do think it's really unfair, because there are so many of my fellow creators and friends who have like really successful YouTube channels. Especially मैं उस दिन पढ़ी थी Mariam Parvez, there's a girl, she hit 1 million. I did not see people celebrating her achievement like magazines and stuff जैसे वो fellow male creators के करते हैं. Why? Because her audio, I mean that there's just one milestone ना, so it should be celebrated and both it's not ways. just that, like it's not just her, Nishu है, you know, Anusha says 1 million वाला मार्क करी ना, उसके अलावा Nishu, Anusha and Khatija, I've known these people, Helena even vlogs a lot, I've known these people for so long and they've worked so hard. Anusha तो literally रोज regularly और Nishu भी regularly अपनी makeup की लगाती है और Anusha vlogs लगाती है. Right. So I felt a little, and gossips as well. Right. I felt, I'm sorry if I'm missing anybody's name. मुझे तब भी मैंने उन लोगों को I think personally भी एक ग्रुप में बोला था during the PISA time as well, because I didn't like it that they weren't nominated. I'm very glad they added Faiza Salim in the category. Right. एक उन्होंने डाल के कहा कि भाई representation हो गया. अगर आप बोले Instagram representation, तो वो तो Instagram पे हैं ही ज़्यादा. I would say it's a woman dominated platform, so they had to put a woman there. But like YouTube पे I feel it's kind of unfair, because उनको ऐसा समझा भी नहीं जाता, ऐसा I can't find the right word कैसे कहते हैं, they're not appreciated enough and they're not even acknowledged enough like they should be. अभी भी there's an award going on, I wouldn't name the awards, but there उसकी सारी male categories हैं. Right. I personally think all these other YouTubers, ठीक है आप Instagram और चीज़ें अगर आपने नहीं डाली ना डालो, YouTube को ही देख लो, there's so many female content creators that are there which I think are very deserving. नहीं, मुझे I again आपने तो 1 million mark वाला बोला ना, Kitchen with Amna है, I think she's one of the biggest, so she's someone जो कि ना खामोशी से फैसलाबाद से कर रही है. I think मैंने उनकी रेसिपी से कुछ बनाया है उस दिन आना, जो मिलियंस में जिनका सर she has, मैंने आपकी दाल बनाई थी. 2 million से ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं. शी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट. गूगल ने बाहर से आकर पूरी एक ब्रांड फिल्म बनाई है उनके ऊपर. किसी अवार्ड में वो, मतलब मैं उनको कंसिडर करता हूँ एज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन पाकिस्तान, बिगर देन ऑल ऑफ अस. नोबडी नोज हर, नोबडी सेलिब्रेटेड हर, राइट? एंड किसी किस्म के डिजिटल अवार्ड्स में, किसी किस्म की मेन स्ट्रीम मीडिया में किचन विद आमना जो है वो नहीं, कुकिंग विद आमना, किचन विद आमना, आई थिंक एक आमना वाला मैंने देखा था क्योंकि उनकी उर्दू में रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड कुकिंग. Recently I've started cooking daily. I mean एक दिन छोड़ के unwanted information. so वो चीज़ you're right, and it's very helpful. अगर मेरे जैसा आप YouTube पे खोले तो I think टॉप पे उनकी वीडियोस आती हैं. बिल्कुल. तो अगर आप खोलो
she's helping so many people at home. You're saving lives. Yeah, exactly. And मेरा my cook लिटरली उसका ये होता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए ना, कुछ डिफरेंट टाइप का लज़ानिया चाहिए, मुझे यूट्यूब पे रेसिपी निकाल दे, मैं बना दूंगा. और वो यूट्यूब पे रेसिपी कैसे ही इज़ एबल टू डू इट इज़ बिकॉज अब उर्दू में वो सारा कंटेंट आना शुरू हो गया. सो अनफॉर्चुनेटली यूर राइट, यूट्यूब पे वो है. बट ऑल्सो अगर मैं इंस्टाग्राम पे कहूँ ना, अगर आपने कभी रेट्स देखे हो जो यूट्यूबर्स ऑन इंस्टाग्राम चार्ज करते हैं वर्सेस हाउ मच यू गाइस चार्ज, इट्स अ बिग डिस्क्रिपेंसी. अगर आप not even half of it. हाँ, मतलब अगर आप देखें कि दी amount of money that you're generating or you're moving versus how much money they're moving, and if they're obviously doing it on YouTube, and I'm not discounting them कि वो ज़्यादा charge करें, what I'm saying is कि अगर वो इतना charge कर रहे हैं और brand is willing to and ready to pay that means कि जब आप ज़्यादा business generate कर रहे हैं you should be paid more. Yeah. Right? या तो it doesn't make sense, या तो जो वो चार्ज कर रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, लेकिन ब्रांड्स उनके पास जा रहे हैं बार बार. तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड्स हैव बिजनेस के अंदर उनका आ रहा है, इकोनॉमिक्स के अंदर मेक सेंस. देन व्हाई आर वुमेन बीइंग पेड लेस? और मैंने ये भी देखा है कि जब खवातीन, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड वुमेन आर ऑलवेज पेड लेस इन एवरी सिंगल फील्ड. बट इट्स सैड, राइट? बिकॉज goes on. you'll have a woman, मैंने ये इवन हमना के साथ देखा है कि एजेंसीज, PR कंपनीज विल कॉल, एंड इफ दे आर टॉकिंग टू हमना, वो उनका एक अप्रोच करने का मेथड डिफरेंट होता है. कॉन्स्टेंटली गैसलाइट करेंगे, कॉन्स्टेंटली कहेंगे कि आपको ये नहीं पता, वो ये है, हाँ ये करना है, वो जो है ना वो इतने चार्ज करी, वो इतने चार्ज करी. व्हेन दे टॉक टू मी, सेट हो जाते हैं सारे के सारे, राइट? एंड दैट, और मैंने तो ये लाइव देखा है कि मैंने काफ़ी क्रिएटर से बात भी की है, पीपल हु हैव मेल मैनेजर्स एंड पीपल हैव फीमेल मैनेजर्स, उसमें भी होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल. start dealing with you differently. जनरल ना हमारी सोसाइटी में एक है, people take men more seriously. I think this is a thing जो कि फैमिली से शुरू होती है. इवन एज इन अ हाउस होल्ड आदमियों की बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बनस्बत औरतों की. आई थिंक वो तब से, सॉरी आई एम रुइनिंग एवरीथिंग, तब से शुरू हुआ हुआ है. तो वो इन सारी फील्ड्स में भी वही चीज़ चलती भी आती है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती भी आ रही है. डू यू थिंक दिस कैन बी चेंज दो? आई डू थिंक, बिकॉज पर्सनली मैं आपको बताती हूँ, पर्सनली व्हाट आई हैव सीन इज़ नाउ वुमेन आर बीइंग मोर वोकल एंड दे आर डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स, एंड आई डोंट सी देम, I don't think they're going to back off now. They want their rights and they want it. I see it on social media. Even the movies that I watch now, जितने भी मैं सारा content देख रही हूँ, बेशक आप Netflix पे देखें, कहीं पे भी देखें, it's all women-centric content, and it's all about women portraying in a way कि this has been happening wrong in the society and it needs to change. And they're normalizing the change as well. इसी तरह होता है ना, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बिठाई, रीवायरिंग, बेसिकली रीवायरिंग हो रही है ना. और उसमें काफ़ी दफ़ा आपको कोई बहुत ही बड़ी तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. काफ़ी दफ़ा वो जो सटल द थिंग्स दैट यू गाइस डू, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि द थिंग्स दैट यू गाइस आर डूइंग सबकॉन्शियसली, व्हाट दैट इज़ डूइंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट is extremely powerful, because without actively going out there and saying, you know, you need to do this and you deserve this and you deserve that, आप सिर्फ इमेजरी में दिखा रहे हैं. हमारी जो आवाम है ना, उसको अगर आप कहोगे ना कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं, वो परेशान हो जाएगी. बिल्कुल, आपने ऐसा कहा कैसे, मुझे आप तो इधर आए ना, आप करें, उनको करके दिखाएं, ताकि उनके माइंड में बैठे कि भाई अच्छा ये भी होता है, ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल, और ये तबाही नहीं मच गई. लाइक इफ हिरा कैन डू इट, देन यू नो एनी अदर गर्ल कैन डू इट एज वेल, बिकॉज़ आई एम जस्ट लाइक any other girl, nothing special about me. Yeah, absolutely. PISA awards का आपने तस्करा किया. I remember it was a huge win for the industry, because for the first time digital media was being, you know, उस टाइम पे भी मुझे याद है कंट्रोवर्सी आई थी, किसको you know nominate किया गया, किसको नहीं किया गया, ये सारा. But for me personally it was a big deal. I look at it two ways. I was not even fully satisfied with my list, because there are a lot of my fellow creators who deserve to be on the list, but they weren't. Right. Which I think is very wrong. But on the other side, why I went there and why I accepted everything, I did everything, because as an industry as a whole, it was a big step. Okay, somebody from us is being acknowledged, which is a huge thing, because that's never happened before here. Absolutely. और अगर आप इंडस्ट्रीज देखें जो हमारी सेम है बाहर वालों से, उसमें बहुत फुल फ्लेज होते हैं. उसमें ना ये जो लोगों का ये होता है ना कि इन्फ्लुएंसर का अवार्ड इसे मिला, उसमें ना उनका ये भी ख़त्म हो जाए कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. आगे जाके प्रॉपर कैटेगरीज बनती हैं, एक्टिविस्ट की लहदा, टेक इन्फ्लुएंसर की लहदा, ब्यूटी की लहदा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इवेंचुअली जाकर डिजिटल अवार्ड्स ही सेपरेट होने चाहिए, बिकॉज आई पर्सनली डोंट सी के कोरिलेशन. पाकिस्तान में तो अभी नहीं हो रहे ना डिजिटल अवार्ड्स, नहीं अभी नहीं हो रहे, लेकिन बाहर होते हैं. हाँ, बाहर तो इसी तरह होते हैं, बिकॉज वो कैटेगरी, वो उसकी व्यूअर डेमोग्राफिक सब अलग है. ह्यूज. इवन इन द फैशन इज लाइक लग्जरी वाली सेपरेट, स्ट्रीट वाली सेपरेट, ये साइड सेपरेट. तो आई थिंक अगर लोग,
मैंने I think I spoke to this person as well who was really against all of this. I was like, you know, what's the issue? He's like, this happened, this person was not included. I was like, and उनकी hate मेरे पे आकर निकल रही थी कि इसको award क्यों मिला. तो I was like, you know, मसला क्या है? I want to talk and understand your point of view. मैंने ना ये चीज़ देखी है, बल्कि मैंने आप लोगों से ही देखी है. You guys, when you get kind of a hate comment and anything, you guys talk to that person and ask and try to understand कि उसके समझ क्या है. हाँ, तो मैंने इस बंदे से पूछा. I was like, you know, he looked sane, spoke sane. तो I asked him, I was like, क्या मसला, सीन क्या? तो he's like कि भाई इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया, ये सब ने चीज़ किया. I was like, you do realize कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी. I was not in the organizing team. I was just called there. Yeah. And I was honored to be there and be a part of it and get an award. And be a representation of an entire industry. And to be very honest, like all of the, आपने start में बोला कि a lot of these girls, your colleagues who weren't nominated, I don't know a single one who was upset over it because for everybody felt like, you know, okay, हम नहीं तो कोई तो हाँ पहुंच तो रहे ना, we're getting there, baby exactly. Steps. Absolutely. Like it took us 6 years to come here, man. At least appreciate something. Exactly. And it's the same thing. Like ये PISA awards हुए थे, ये Prime Minister meetup हुआ था, ये चीज़ें बड़ी powerful थी in terms of how the imagery went out because now mass market saw it and they were like अच्छा ये भी कुछ होता है. You know, YouTubers भी कुछ होते हैं, influencers भी कुछ होते हैं. Hate भी आया था ना, वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी साथ साथ हुई that people couldn't take it. There's like, why are we seeing these face everywhere? अच्छा, हमारी ना ऑडियंस का एक और भी चीज़ है. अब आप निम्रा वाला केस देख रहे हैं. Have you seen that girl who recently got famous? Yeah. That was a very cute video, first of all. अच्छा, पहले लोगों ने पहले बनाया उसको और फिर तब आ गया. पहले बनाया, पहले पागल हो जाते हैं लोग. क्रेजी, मतलब नहीं, ये इसको लाओ, ड्रामा में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, हर जगह इसको ही होना चाहिए. और जैसे ही वो बंदा आने लगता है, they start hating that person. It's like, why are you giving that person so much attention? It's like, you're the one who gave that person so much attention. Yeah, वो तो एक बच्ची है बेचारी यार, उसको जो हर चैनल बुलाएगा तो वो तो जाएगी. तो वो जाएगी. और she's so candid and so full of life. She's very innocent. Yeah, that's what I would say because she was just completely raw and innocent. And मुझे जो सबसे ज़्यादा, she's just one person who's gotten like a, you know, a one hit wonder type का उसका वो हुआ. But there are a lot of these TikTokers right now जो कि young लड़कियां हैं. मैं बहुत podcast में इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन मुझे वाकई बड़ा परेशानी होती है कि they're all very innocent girls. मुझे उस दिन कोई अरीका की एज बता रहा था. I think she's like 16, 17, इतनी किसी एज. Yeah, she's really young. And the hate she got तुम वाले उस पे, and I was like, you know, this girl has just started her. Imagine getting that hate at 17. Yeah. Imagine. I was like, भाई मैं तो बंद करके बैठती थी. हाँ. कैसे? और उस बच्ची की मेंटल हेल्थ कहाँ पर होगी? या तो अगर वो लोग कहते हैं ना थिक स्किन, अगर वो थिक स्किन बना रही है ना, बड़ी अफसोसनाक बात है कि उस बच्ची को इस एज में ये करना पड़ रहा है. True. वो तो उसकी बड़ी. And she didn't even do. She was just in a freaking song. Yeah. She didn't even do anything wrong. Yeah. I mean, not that any of us do anything wrong. But like and so again, what I'd like to understand is what did it feel truly? You went there. It was an award show. Honestly, whatever it represented, whatever this, whatever that, you are an individual who's worked 6 years very hard. Yeah. Being acknowledged for it, being there, and you know, it was actually a user voted award, and the fact, you know, just satisfaction milti hai na that your audience went out there and voted for you. Yeah, it's like a different satisfaction. It's like, okay, legit, I did something. Yeah. And then so did it make you happy? Did the happiness last? I was very happy till I was in Dubai because I wasn't looking at social media. I was in my own mood. I was like, oh, I was dancing, I was happy, this and that. To be very, very, very honest, I'll be very honest. I did not get any hate on my Instagram platform. Even if you look at the post, mera wo wala, it is full of love and so much love that even if I read the comments now, I'm overwhelmed. Abhi bhi main kabhi kisi ka DM kholu to usme aata hai, oh, I voted for you, this and that, you're my favorite. So it makes me really happy. But there was, I think Twitter tha. Twitter pe maine khola and everybody was like, why did she win an award? And I was like, you won't even let me be happy for a day? Why? Yeah. मुझे उनका भी एक point of view समझ आता है. I spoke to certain people and they were like, they didn't like the fact that Twitter was not included. Again, that's not. But why would they hate on you? Yeah. Why would they hate on you? Like if Twitter is not included. Because I feel women are an easier target to. हाँ, और मैं यही देखता हूँ ना, देखें प्राइम मिनिस्टर मीटअप हुआ था, मुझे याद है कि आपके और हिमायल के ऊपर बहुत ज़्यादा creators there. There's so many creators there, and the people are like, why are these girls there? Yeah, and they said, you know, why are these girls that talk about fashion? There was Z Tech Care was there as well. Yeah, he talks about tech. Yeah, right. I think current affairs पे बात करने वाले वो थे. जुनैद अकरम था, वो क्या नाम है, जिहाद जफर था,
इस तरह के लोग थे जो करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा, बात मैंने करते कुछ ये भी बात सुनी जिस पे लोगों ने पूछा कि ये सब गए हुए थे तो सवाल खाली 6 ने क्यों पूछा. फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट माई फूफी का पुत्र. मैं उसको नहीं कहूँगी कि बैठो और मेरे सारे सवाल सुनो, और मेरे सारे सवाल सुनेगा. हमें उन्होंने कहा था कि इतने सवाल पूछे जाएंगे, सब ने हाथ रेस किए, जिसका सवाल पूछने का टाइम मिला वो मिला, उसने वो सवाल पूछा. राइट. So obviously, like, I mean, these things are not in your control, right? And आपको जो hate मिला उसका assumption. Somebody is like, you know, ये सारे पर्ची के घर के गए थे. भाई, I come from a very normal middle class background. मेरे कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, और मैंने कभी भी the other day I did a question and somebody asked me, आपने PISA का अवार्ड कितने में खरीदा था? And then there was a question that's like, आपको अवार्ड पे पैसे कितने मिले थे? And I was like, लोगों को बड़ा शौक है हमारी, आई थिंक मे बी कल्चरली हमारा है कि हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने का बड़ा शौक होता है ना. लगता है कि हर चीज गेम हो रही है, हालांकि हर चीज लिटरली हो जाती है. I remember I posted a photo of my dad once and this is girl like, तो ये है वो आदमी जो आपके सारी फजूल खर्चियाँ और चीज़ों के पैसे उठाता है. I was like, okay, one, it's my dad. Even if he does all of that, how does it concern you? Secondly, and that's totally not true. I work, I earn, and all the things that you see. अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ है, जो ये नई जनरेशन और ऑडियंस आई है ना, अगर वो आपको अभी फॉलो करें तो उन्हें लगेगा कि ये सब सिर्फ ग्लैमर है. बट पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस day one, they've seen where you come from. Yeah. Sorry. They've seen the transition and they've seen the growth, and that is one of the reasons why they believe in you so much. And that actually वो जो चीज़ होती है ना, जब आप पूरी जर्नी देखते हैं ना, it's actually very inspiring and it's very empowering because you came from nothing and you made all of this, and now, I mean, there are a lot of things that I can afford now which I couldn't back in the day because of all the hard work and stuff I've done. If people don't like or don't, अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती. 2 तरीके हैं, ठीक है, आपके माइंड सेट होते हैं. एक तो आप पॉजिटिवली चलो, एक नेगेटिवली. अगर आप मेरे पास कुछ कपड़े, कुछ चीज़ें देख रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई इसके पास इतने पैसे हैं, ये इसने ये कैसे लिए, आप हसद ना करो. आप ये देखो कि भाई उस बंदी ने इतने साल काम किया और अब वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकती है, तो मैं भी अपनी एनर्जी काम करने और इन चीज़ों पे लगाऊं ताकि मैं भी एक दिन जाके ये चीज़ें कर सकूं. और ये बहुत पावरफुल चीज़ है. बिकॉज देखिए, मैं बिजनेस क्लास की बात करूंगा. मुझे पता है कि मेरी या मेरी बेगम की औकात नहीं थी कि हम बिजनेस क्लास करेंगे ट्रैवल, राइट. हमें ये पता था कि हम कंटेंट कर रहे थे, तो हमें था कि यार कभी भी बाहर का ट्रिप नहीं आएगा. हम बस देखते थे बड़े क्रिएटर्स को, सोचते थे हम भी जाएंगे एक दिन, बट हाँ, लेकिन लगता नहीं था कि ऐसा होगा. जो चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस वजह से कर पा रहे हैं बिकॉज अल्लाह ताला ने तो चलो किया वो भी सारा का सारा, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट. And for sure, after that hard work we were able to do it, and हमने कोई rocket scientist नहीं है. There were no shortcuts, there was no nothing. There was no shortcuts. I think you've also worked for free in the past as well. भाई 2010 में मैंने काम शुरू किया था. 2014 से पहले तो 1 रुपया था ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर. उससे पहले तो हम सिर्फ कंटेंट बनाते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट. सो लोग आकर आज ये बोलते हैं कि यार तुम लोगों ने तो ये बस तुम लोगों को ईजी मिल गया, और मुझे उसके ऊपर दुख होता है कि यार तुम भी भाई, तुम्हारे अंदर भी इतनी सलाहियत है, तुम कर सकते हो. हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ एक पैशन था एक चीज का, और उसको किया. It's a free platform. If anybody thinks it's easy, come on the platform, create content. And if you think that ओ ये बंदा है और ये बात नहीं कर रहा जो मुझे लगता है करनी चाहिए, आप कर लो यार. आप कर लो, आओ करो. That's opportunity for you rather than projecting it onto someone else. But yeah, so it's sort of sad कि internet has evolved into this sort of toxic, मैं कहूँगा, I don't know if it is, but toxic there place. Is a lot of, I mean, nobody can deny that there is a lot of toxicity involved online now. Online. And जितने भी मैं बड़े creators से बात करता हूँ, there is a mental health problem across the board. You know, during this COVID wala time, my anxiety has like skyrocketed. I wasn't able to eat. मुझे बहुत ज़्यादा मुझे जब एंग्जाइटी होती है ना, मुझे उबाक आते हैं. लिटरली पूरा दिन घर में मैं चल फिर रही हूँ, मुझे उबाक आ रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, माई स्टमक गेट्स अपसेट. I literally had anxiety attacks at night. I used to wake up इस तरह के ओ क्या हो गया, अब क्या हो सकता है, right? Because there's so much that has happened during this time which people don't understand and we don't even show it. I remember I met Arish in Lahore, ठीक है. So I was going for a show, और उसके पहले ना मेरी anxiety side से देखा था. He's like, you know, I've never seen this side of you online. And I was like, maybe this is what people don't understand. They don't see the anxious or the bad side of us online, so they think we don't have those days and it doesn't exist. जब it does, क्योंकि मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा यार ये काइली जेनर वगैरह ये सब होते हैं, इनकी ज़िंदगी में मसले नहीं होते, इनको इतनी हेट आती है. कहता है
आपने कभी अपना सारा लगाया है? कहते हैं मैंने तो कभी आपका भी नहीं देखा था, तो आप सोचो उनका कितना आता होगा, क्या होता होगा. बिल्कुल एब्सोल्युटली. एंड आई फील लाइक कि सोशल मीडिया ने ना हम जो पब्लिक फिगर्स हैं उनको sort of dehumanise कर दिया. Yeah, we don't have a heart, we don't have feelings, you can say whatever you want. And then people justify saying you have a public profile, you should be able to take it. Why? अगर एक आम आदमी गली पे उसको वो ऑफेंड होगा अगर उसके बारे में कोई आगे बात करे, तो 1000 बंदा अगर मेरे बारे में वही बात करेगा तो मुझे ये बता देना, इंसान तो मैं भी हूँ, इंसान तो वो भी है. फीलिंग्स तो सबकी हैं, तो why should I be okay? और what is it that allows you to come and say whatever you want? I do understand this one thing, that you can never make everybody happy, but I also do I do agree with this, and I want people to understand this, that if you don't like my content, you don't have to see it. There's an option, you can either scroll down, and if you don't generally like me, you can unfollow me. पर किसी चीज़ पे जाना मैंने देखी थी कि अभी रिसेंटली एक फोटोग्राफर ने मेरी कोई तस्वीर लगाई हुई थी, किसी लड़की ने उसमें नीचे लिखा था hate her. I was like, she's a married woman. I was like, you're married, you've started another life, a separate thing in your life, and मतलब आपकी सोच अभी भी ये है कि you're hating another girl online. Why? Yeah, and you're how can you hate someone and go and write it? मैं कहता हूँ आप जज कर रहे हैं, आप हेट कर रहे हैं, कर लें. रियल लाइफ में सड़कों पे कितने लोगों को हेट करते होंगे. आपके अंदर इतना कैसे एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? कैसे सकते कि आप जाके कमेंट करके को भाई आई हेट दिस फलाना कैसे? आई कैन, इवन इफ आई डोंट लाइक समवन और आई डोंट लाइक समबडीज कंटेंट, आई वुड जस्ट स्क्रॉल डाउन. और इवन ऑप्शन होती है यार, आई डोंट वांट टू सी. ठीक है, शो लेस. म्यूट पीपल. या यू कैन म्यूट पीपल, यू कैन शो लेस. ये वही बात है कि मैं बाहर अगर मैं लोगों को बार ये कहता हूँ यार, डिजिटल हाइजीन, व्हाई इज डिजिटल सो डिफरेंट? अगर if you whatever you're about to do on digital, if you can't do it in real life, don't do it. मैंने सिखाते हैं ना ये, वो जब किसी के घर लेके जाते बेटा तमीज से बैठना, कोई गलत बात नहीं करनी. Exactly. वैसे माँ बाप को सिखाना चाहिए बेटा ऑनलाइन भी कोई गलत बात नहीं करनी. और ये बड़ी दुरुस्त बात है कि लाइक ज़्यादा शोर डालना बंद करो, तरीके से बात करो. क्रिटिसिज्म, फीडबैक, आई अंडरस्टैंड, बट देयर इज अ वे टू गिव इट. क्योंकि अगला इंसान भी एक इंसान है. वो कोई ये नहीं है कि कोई हमारे पास कोई टीमें बैठी हुई हैं जो कि जो है ना बेसिकली सारे मैसेजेस पढ़ रही हैं और हमें अच्छी बातें आके बता रही हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड वी डोंट इवन हैव अ टीम ऑन बोर्ड जो हमें डैमेज कंट्रोल कर ले. पीआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज परफेक्ट. मिस्टेक्स होती हैं. एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स. आई जस्ट थिंक पीपल नीड टू. अच्छा, हमारी ऑडियंस ना काफ़ी अनफॉरगिविंग भी हो गई भी. अगर किसी ने एक चीज़ करके पूरे दिल से, अगर सच्चे दिल से उस बंदे ने माफ़ी मांग ली, then I personally think you should forgive that person. If not, तो फिर आप उस बंदे को ये सिखा रहे हो कि भाई माफ़ी नेक्स्ट टाइम माफ़ी ना मांगी. आप चेंज हो ही नहीं सकते. आप ऐसे हैं तो आप ऐसे ही रहें, which is wrong. People should forgive people and people should move on. सोशल मीडिया का ये भी है ना, एक पुराना से पुराना स्कैंडल उठा के किसी का ले आएंगे. इसने उस सदी में ये कहा था भाई people change. Even I'm not the person I was 4 to 5 years ago. I've worked a lot on myself, and I would want people in my real life and real life both to understand that I'm not that person and to not bring up those mistakes or that person I was back in that time, because I've changed, I've grown, I've matured. And everybody has those mistakes. The only difference is हमारी mistakes public हैं, उनकी mistakes उनके पास हैं. बस वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आके जो जिस attitude से आते हैं वो बस इसी वजह से, because they don't have it in front of everyone else. True. But so Hira, thank you so much for being part of the show. Thank you for having me. And this was... Be nice to people online. Be nice to people online. And if you like this episode, do share it with your friends. Thank you so much for watching. Thought Behind Things. My name is Sayyid Muzamil. See you in the next one.